Hello everyone, I am Raviansh Singh. I am from NIT Jamshedpur, and today I will be going to teach you about the two block system, which is a part of Newton laws of motion and the friction chapter of class 11th NCERT physics. This particular uh, concept is asked multiple times in JEE mains as well as in the JEE advanced. Today, I will be giving you the very clear thought process about how this question should be tackled in the exam efficiently so that you can save time for other questions that require your attention. So, let's start. So, starting with the very basic concept of two block system. Here we consider a ground that is smooth and two blocks, one above another, having some friction, new one between their surface, where the force is applied on the lower block. Here the ground is frictionless or smooth, so we can consider the frictional coefficient as 0. Here, if we draw the free body diagram of both the blocks, so let's say this is M1 and this is M2, and M2 has a force F acting upon it. So, friction has a very interesting tendency. It always opposes the cause of motion. Here, the motion will be like M2 wants to go this side, where M1 wants to stay due to inertia. So, between M1 and M2, M1 wants to stay so that it can go like forward with the friction. But M2 wants to resist that. To resist that, it will apply a force in the backward direction, that is F or FL, limiting friction. So every action has an equal and opposite reaction. So on M1, it will be FL1 in the forward direction. Interestingly, uh, also the two blocks, we are assuming that there is no slipping between them. To consider it, we can say that they are moving with a particular direction. Uh, Excuse me for a minute. This should be not there. Yeah. So, assuming that they both are going in the forward direction with an acceleration a, common acceleration, we are neglecting the slipping between them for the time being because we will deal it further in this concept application video. So, what we can write about A is the total force that is acting on M1 is FL1. And what is the mass of M1 is M1. FL1 can be further written as nu 1 M1 into G divided by M1, which comes out to be nu 1 into G by 1. Okay? So this is the common acceleration by which the both block will tend to move when the force is applied. Okay? So writing on like this particular acceleration will be on the on the block of mass m2 also. So what we can write is F minus FL is equal to m2 into A, where F is the force on the block. FL can be written as nu 1 into m1 into G is equal to m2 into acceleration can be written as mu1 into G from here. Simplifying this, we can find that F is equal to nu 1 into
m1 plus m2 into g. This particular amount of force is the limiting force till which the block will move together, or we can say that the sliding will not occur between these two blocks. The moment the force will be greater than this value, slipping slipping will start. So particularly in this particular example, हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने दो ब्लॉक लिए है, एक स्मूथ सरफेस पे उसे प्लेस किया है, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया है, दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसे हम लोगों ने नॉन ज़ीरो रखा है, क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज़ निकालनी है, कुछ जो पर्टिकुलर लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो निकालना है, उससे जो स्लाइडिंग कब होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। इसलिए हम लोगों ने जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है उसे नॉन ज़ीरो रखा है, स्मूथ रखा है, ताकि थोड़ा सा भी अगर उस पे फोर्स लगे तो वो मूव करने लगे। इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने कॉमन एक्सेलरेशन निकाली है। वो कैसे निकाला है? एम वन पे एक लिमिटिंग फोर्स लगेगा, किसके वजह से? वो एफ एल वन के वजह से। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने क्या किया है, जो फ्री बॉडी डायग्राम था यहाँ पर, जब जो आप लोग देख सकते हैं एम टू के ऊपर, वो एक उससे एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, जिसको सॉल्व किया गया है, एक वैल्यू फाइंड आउट की गई है। अगर हम लोगों ने उससे ज़्यादा फोर्स लगाया तो एफ एल वन जो होगा, ये जो एफ एल वन आप देख रहे हैं, ये अपना लिमिटिंग वैल्यू रीच कर जाएगा। ये जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू अपना रीच करेगा, हम लोग उसके आगे उसका एक्सेलरेशन हम लोग नहीं बढ़ा सकते। बट व्हाट इज इन द सेकंड केस, वो एफ पर एफ पर तो कोई भी बाउंड्री नहीं है, ये बढ़ते जा रहा है। दैट्स वाई m2 will start to move with a greater acceleration, and m1 will be heading towards with the constant acceleration, that will be fl1 by m1, और इसीलिए दोनों के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। I hope this concept is clear to you. Moving on to the next exercise, next setup, there where we are going to find out the condition for the sliding, for the slipping between the two blocks. When the force is applied, well, you can see the force is applied on the upper block, and the setup is pretty much similar to the previous one. So here, what we can say is that let us just draw a composite block. फोर्स तो आपके जो ऊपर है वो उसी पे लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है। सो दैट इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्राउंड एंड फोर्स। सो व्हाट वी कैन से इज फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर, वो इस पूरे ब्लॉक पे लगेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है ग्राउंड और M2 के बीच वो जीरो है। ये दोनों फ्रिक्शन से बंधे हुए रहेंगे, ये दोनों जल्दी मूव नहीं करेंगे, कुछ लिमिटिंग वैल्यू आएगी फ्रिक्शन की, उसी के बाद M1 जो है वो स्लाइड करने लगेगा M2 पे। हम लोगों को वही कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सो this is moving with this is given or acting upon a force F, and due to which यहाँ acceleration है A. So what we can write again here, acceleration is equal to force upon mass, which is m1 plus m2. I hope this is clear. अपॉन यहाँ तक क्लियर है। और इसके आगे हम लोगों ने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। हम लोग उसके फ्री बॉडी डायग्राम से एनालिसिस करेंगे इसके बाद कि यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है। लेट अस ड्रॉ फॉर m1, दिस इज m1, यहाँ पर फोर्स लग रहा है F, इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा FL1 for another block M2,
ग्राउंड से सरफेस जीरो है, मतलब ग्राउंड और M2 के सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर F जीरो हो गया है। ये पीछे की साइड लग रहा है फ्रिक्शन, तो ये यहाँ आगे की साइड लगेगा, FL1। सो यहाँ पर M2 जो है वो टोटली फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है। सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर जो M1 है, M1 पर तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बट on M2 there is no external force. It is totally dependent upon friction for its motion, for its cause of motion. फ्रिक्शन पे जो भी भरोसा करता है उसके साथ कभी ना कभी ऐसा धोखा होता है। व्हेन वी सी अबाउट स्लाइडिंग रोड, स्लैंटिंग रोड, टर्निंग है, वहां पर फ्रिक्शन पे भरोसा किया जाता है। अगर हम लोगों ने स्पीड ज़्यादा रखी, फ्रिक्शन कम होगा, हम लोग स्लाइड कर जाएंगे। दैट्स वाई, तो यहाँ पर हम लोग M2 के लिए लिमिटिंग केस के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा FL1 should be equal to the M2 into acceleration. Okay, that's the only force acting, and let's say the body is moving with an acceleration A. What we can say about the new one M1G, that's the value of FL1, which is equal to M2 into A. Okay, we will substitute the value of a here from above. So what we can say, let me just erase it once. What we will write about in place of a is like f upon m1 plus m2. Okay, so here what we can say about f is equal to new one m1 g into m1 plus m2 upon m2. This is the amount of friction, which this is the amount of force required for the body to not slip over one another. This is the amount of force that is required for the body, हमारे जो जो दो ब्लॉक हैं वो दो कब तक मूव नहीं करेंगे, कब तक एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं करेंगे, कब तक स्लाइड नहीं करेंगे, जब तक उनके बीच में इतना फोर्स लगेगा। अगर इससे हम लोगों ने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो द इंस्टेंट the body will start to slide over one another, because फ्रिक्शन का जो ये वाला जो लिमिटिंग वैल्यू है ये कम हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, जो कि होगा न्यू वन इंटू एम वन इंटू जी। ओके, बट f का वैल्यू बढ़ते रहेगा। दैट्स वाई द एक्सेलरेशन ऑफ m1 विल इंक्रीज, बट correspondingly the acceleration of m2 will not increase. दिस इज द केस ऑफ स्लाइडिंग, इसीलिए स्लाइडिंग होगा। ओके, so let us go to some elementary setup, elementary question for you which I have just prepared. Okay, so in this particular setup, what we have given is a two block system. Okay, very basic. Okay, two block system. We have just done. Force is applied on the upper block F, where the ground is smooth and the friction between the two blocks is given as 0.5. Okay, in the very first question, what we have been asked is minimum value of f such that slipping begins on any surface. Okay, so we have to find the minimum value of f for which slipping begins. सो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस पर्टिकुलर सेटअप का, तो हम लोग बोल सकते हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे एफ लग रहा है। ओके, हम लोग कंपोजिट मास ले सकते हैं इस केस में, बिकॉज जो ग्राउंड है वो स्मूथ है और दोनों के बीच में कुछ कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा लगता रहेगा। ओके, सो इस केस में हम लोग क्या ये कह सकते हैं
कि अगर हम लोग फोर्स थोड़ा सा भी लगाते हैं, थोड़ा सा भी, like just above 0 newton, the block will start to move because there is no resistance. The friction between the block and the ground is zero. सो क्या हम कह सकते हैं इन चारों ऑप्शन में सबसे रेलेवेंट होगा 0 न्यूटन? वाई? बिकॉज एफ अगर हम लोग थोड़ा सा भी उससे लगाते हैं ज़्यादा तो ब्लॉक मूव करने लगेगी। स्लिपिंग कहाँ होगा? इफ वी हैव बिन आस्क्ड कि स्लिपिंग कहाँ होगा, any surface that will be between ground and the M2. Okay. Now, in the second question, like the follow-up question for the first is to find the minimum value of f. क्यों, क्या चीज का मिनिमम वैल्यू निकालना है? फॉर विच स्लिपिंग बिगिंस, ओके, बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। अब हम लोगों को बोथ द ब्लॉक्स, लाइक दोनों के बीच जब स्लिपिंग स्टार्ट होगा उसका निकालना है। ओके, सो वी विल नाउ फाइंड आउट, like let me write out this second number. This is first. Second, we will just draw a free body diagram. 3 kg block, acceleration is A, force given F, that implies A is equal to F by 3. Okay, first result. Now what we will see is like M1 1 किलोग्राम का है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इसके पीछे फ्रिक्शन लगेगा F। ओके, M2 is 2 किलोग्राम, इसके यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा and that will be solely responsible for the acceleration of M2. So what we can say is 2 into A, that is acceleration of this particular body is depending upon F. F का वैल्यू कितना हो जाएगा? न्यू 1 इंटू M1 इंटू जी, बिकॉज ये दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? F/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू मास ऑफ M1 इज 1 इंटू 10। सो F हम लोग कितना लिख सकते हैं? इज 5 into 10, like 0.5 into 10, we can write it as, just a second. Okay, we can write it as 5 5 into 3 by 2. Okay, where we can write it as 7.5 newton. This will be the value of force required for the slipping between the two surfaces. This is this is how it's solved. This is just, you know the very basic approach, the very basic, thought process how you should approach this kind of problem. देखो कहाँ पर फ्रिक्शन किस चीज, किस बॉडी पे डिपेंडेंट है, किसको वो मूव करा रहा है, we will apply the limiting case in that situation, and accordingly we will find the limiting case for the system. Okay, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं एकदम बेसिक। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम टीसी पार्ट डे लेवल 2 ऑफ योर फ्रिक्शन चैप्टर। ओके, लेट मी जस्ट दिस, यहाँ पर फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5, यहाँ पर दिया हुआ है 0.3, यहाँ दिया हुआ है 0.1। like friction between first two block is 0.5, friction between the another two 0.3, friction between one and ground is 0.1. So can we just write down the limiting friction in each of these cases? So 3 into 0.5 into 10 is equal to 15 न्यूटन। फर्स्ट केस का हम लोग को मिल गया है। सेकंड केस के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एफ 2 will be equal to 2 into 0.3 into 10 equal to 6 न्यूटन। ओके, F3 क्या निकाला जा सकता है? 1, like 6 into, sorry,
In the above case, I have just made a you know mistake. We'll just correct it. The mass will not be 2 kilogram. That will be the composite of both. Okay, so 5 kilogram. 3 plus 2. Okay, 5, and that's why it will come out to be again like 15 newtons. Okay. Now, in this case, in the last case, the mass will be 3 plus 2 plus 1, that is 6 kilogram, and the coefficient of friction will be 0.1 into 10 is equal to 6 Newton. Okay. Can we say that the coefficient of friction, like the frictional force, the limiting frictional force between the lowest block, okay, lowest block and the and ground is minimum? Can we say that upon looking into this example? Okay, so there is 15, we need more than 15 newton to move these two blocks, more than 15 newton to move these two blocks, and like these two block on a whole and this block, but we will only need 6 newton to move m3 and ground. So what will be your answer? So your answer will be just simply, between 1 kilogram and gram. Okay. So with this example, we have come to the end of this video, this concept application video. Okay. I hope I would be to your some help. Okay. I have tried my best to understand, to help you understand about this topic, about the concept behind the two block system and the three block system, and how it should be done efficiently to save your time. Uh, just go through the video once, try to solve as many numericals as you see, and by this way, you will be surely getting a +4 if this type of question came in your exam. Okay, all the best for examination and keep learning.